Good morning, my dear students. Today I have come with lesson 2, a triumph of surgery, lesson 1 of footprints without feet. Okay, in the previous class I had taught the MCQs of first flight, but today I am going to take this lesson from footprints without feet. Okay, this is lesson number 1, a triumph of surgery. So we will be practicing multiple choice questions right now. Okay, so I welcome to this class. The first question is, who is the author of the story A Triumph of Surgery? Last bench, you come. Please don't whisper. Okay. Yes, James Herriot is absolutely right. James Herriot is the author of this story, A Triumph of Surgery. Do you all agree? It's absolutely right. The doctor, okay, that vet is James Herriot, veterinary surgeon, okay, who cures the dog. Question number 2, who does I refer to in the story? I जो है ये किससे रिफर करता है? ओके, स्टोरी में आई से जो लेसन का शुरुआत हुआ है, आई खास करके आई से जब शुरुआत होता है तो तुमको पता है नैरेटर. ओके, तो ऑप्शंस आर ट्रिकी, मिसेस पंपरी, सी वेटरनरी सर्जन, डी नन ऑफ द अबव. सीरियली मैं बुलाऊंगा. यस, कम फ्रॉम द बैक. So C, veterinary surgeon is absolutely right, because James Herriot is the veterinary surgeon himself. Okay, so he is the narrator of the story, and whenever the story starts with I, the narrator is the writer of the story, author of the story. Clear? किसी को कोई doubt? Question number 3. What is the name of the veterinary surgeon? Veterinary surgeon का क्या नाम है? The options are A. Tricky, B. Mrs. Pumphrey, C. Hoskin, number D. Mr. Herriot. तुम क्यों बताती है? Veterinary surgeon क्या नाम है? Mr. Herriot is absolutely right. Please don't help anyone. Okay, you try yourself. Next question is, what problem does Mrs. Pumphrey think Tricky has? Mrs. Pumphrey को क्या लगता है कि क्या समस्या है ट्रिकी के साथ? Mrs. Pumphrey was too much worried about her dog Tricky. तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या लगता है? ठीक है, ए है डायरिया, बी है मैल न्यूट्रिशन, सी है एलर्जीज, डी है ऑल ऑफ द अबव. यस, यू कम. Malnutrition is the correct answer. Yes, Mrs. Pumphrey thought that Tricky has malnutrition. Malnutrition का मतलब क्या है? कौन बोल सकता है? Yes, भूखमरी. हाँ, मतलब वो ठीक, इसका मतलब कि जो अच्छा से भोजन नहीं करता है, he suffers from malnutrition. तो एक्चुअली malnutrition का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसका सोच वही था. किसी का भी बच्चा अगर हट्टा कट्टा हो रहा है तो माँ को लगता है कि नहीं, उसका बच्चा दुबला हो रहा है. वही हालत था मिसेस पंपरी के साथ. ठीक है, होता है ना, किसी गार्जियन, किसी पेरेंट्स का बच्चा अगर हट्टा कट्टा होकर रहा है, बहुत हट्टा कट्टा हो गया, लेकिन उसको पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा दुबला है. वही बात है मिसेस पंपरी के साथ. ओके,
Question number 5. Let's move on to the question number 5. Did Mrs. Pumphrey cut down on sweets as was advised? You see, yes, no, only for a while. She was not advised anything like that. Okay? Yes, you come. Do you all agree? Yes. It's absolutely wrong. One more chance I will give to anyone. Yes, come. Only for a while is absolutely right. This is the correct answer. She cut down on sweets only for few days. After that, she thought that Tricky was not taking interest in eating anything because he was used to eating sweets. Okay, he was used to eat sweets. Means he was habituated. That's why she could not cut the sweets. Okay, so only for a while she stopped giving him sweets, and after that she continued. Okay, and due to which Tricky's fat increased in his body. Okay. Question 7 होगा ना? What was the dog unable to play? Dog कौन सा खेल नहीं खेल पा रहा था? ठीक है? Ring throw, walk, hide and seek, all of the above. ये सब मैं चर्चा किया हूं पढ़ाते वक्त, लेसन पढ़ाते वक्त. मैं yes, you come. Hide and seek is absolutely wrong. Go. Hide and seek, लुका चोरी छिपी थोड़ी खेल रहा था. हाँ. Yes, you come, Satya Prakash. Give the correct answer. Ring throw is absolutely right. Okay. ऐसा रिंग फेंकते हैं तो कुत्ता वहां दौड़कर जाता है, उसको लेकर आता है दांते पकड़ के. तो रिंग थ्रो इज द करेक्ट आंसर. Okay. Now I will move on to the next question. Next slide. Question number. No problem. Question number is wrong. You must not worry about that. The field looked as if it were covered in dash, salt, locust, sugar, ice. I don't. 1 minute. Yes, you come please. Yes, you come. Come fast. Yes, it's absolutely right. The field looked as if it were covered in salt. Okay? Now I will move on to the next question. Question 8. What did the doctor advise? Number A, cut his food. Number B, give him more exercise. Number C, keep him on a very strict diet. Number D, all of the above. Okay. 4 options are there. डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया, क्या सलाह दिया ट्रिकी के लिए, उस कुत्ते के लिए कि खूब खिलाओ, आ जाओ, इसके बाद आ जाओ तुम, आओ. Give the correct answer. Cut his food, give him more exercise, keep him on a very strict diet. Yes, he is absolutely right. D is the correct option. Okay. Now next question. Question number 9. Was the narrator waiting for a call from Mrs. Pumphrey? क्या narrator मिसेस पंपरी से किसी कॉल का इंतजार कर रहा था? यस, यू कम. यस,
the narrator was waiting for a call from Mrs. Pumphrey because the narrator knew that what will happen to the dog Tricky. He knew very well that Tricky is going to get fat, too much fat, and he wouldn't walk. He knew very well. Okay, that's why he was waiting for a call from Mrs. Pumphrey. Question number 10. What is the meaning of distraught? Distraught का मतलब क्या है? Okay. You see the options: bent, worried, upset, both B and C. Yes, come please. इधर का इसरो का मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद इसरो में जाऊंगा. Come please. Give the correct answer. Distraught का मतलब क्या है? Bend, झुकना, worried, upset, both B and C. कौन सा सही है? बोलो. Distraught. Distraught. Are you sure? Okay, go. So both B and C are correct. Distraught का मतलब worried भी होता है, upset भी होता है. ठीक है? इसलिए both B and C are correct. Okay? Now I will move on to the next slide. Question 11 की तरफ हम चलते हैं. How was Tricky acting? Tricky किस प्रकार behave कर रहा था? Acting means behaving. Okay? Number A, refusing to eat his favorite food. Number B, didn't go for walks. Number C, vomiting. Number D, all of the above. So refusing to eat his favorite food, didn't go for walks, vomiting, या सारा. So next कौन है? Yes, come. Give the correct answer. Yes, 1 minute. Yes. So D is absolutely right. All the answers are right. A, B, and C. So Tricky was refusing to eat his favorite food, didn't go for walks, and he was also vomiting. Okay? Now I will move on to the next slide. Question number 12. What was best according to the vet? Because vet के अनुसार क्या ट्रिकी के लिए करना उचित था? ठीक है? A had to take him to the hospital, B to take him for a walk, C to let him have sugar, D both B and C. Okay? तुम आओ. Hey, don't help. कोई help नहीं करेगा किसी का. You must help yourself to find out the right answer. Okay? To take him to the hospital. What was best according to the vet? This is absolutely wrong. Okay? Okay, Sonu, come. This is the correct answer. This is also wrong. I will give you the right answer. Both B and C are correct. Option D is correct. To take him for a walk, to let him to have sugar. No. No. This is also not correct. Okay. The correct answer is to take him for a walk. I was just watching. है, लेकिन ये जो पहले जो दिया वो सही है. तुम बार बार हाथ उठा रहे थे कि राइट राइट राइट, देखो, लेकिन तुम भी, मैं सोचा कि तुम बोलेगा कि आकर कि ये ही सही है. एनीवे, ही हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ओके, दिस इज राइट. टू टेक हिम टू हॉस्पिटल. देखो, कोई भी अगर कोई किसी का भी तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? वॉकिंग ले जाएं, सोचते हैं. हाँ, तो टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल इज द राइट आंसर. ओके, ये तीनों गलत है बेटा. वॉकिंग के जैसा थोड़ा सा लग रहा था, टू टेक हिम फॉर ए वॉक, लेकिन वॉकिंग करवाया किसने करवाया? वेट ने बाद में करवाया था. वेट ने बाद में कुत्ते को वॉकिंग करवाया था, एक्सरसाइजेस करवाया था, बाद में ठीक हुआ था. तो थोड़ा बहुत लगता है कि ये सही होगा. ओके, लेकिन नहीं, ए ही सही है. हॉस्पिटल, सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाना है. ओके,
नंबर 13, व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? दूसरे डॉग ट्रिकी को इग्नोर क्यों कर रहे थे? उसका साथ नहीं दे रहे थे. ठीक है. ऑप्शंस आर ए, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ही वॉज इल, ही वॉज फ्यूरियस, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट कौन है? यस, आ जाओ. गिव द करेक्ट आंसर. इट्स वेरी सिंपल. He was ill. Absolutely wrong. वो इसलिए कि नहीं था कि बीमार है, इसलिए उसको सारे दूसरे कुत्ते इग्नोर करते थे कि वो बीमार है, बल्कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो खेलने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था. कौन? ट्रिकी. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन 14. फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड? कितने दिनों तक उसे भोजन नहीं दिया गया? ऑप्शंस आर 1 डे, नंबर बी 2 डे, नंबर सी 3 डे, नंबर डी 5 days. 3 days, 5 days, 2 days, 1 day. Which one is right? Yes, you come. Riya, give the correct answer. 5 days. Wow, how can it be? Yes, 2 days is correct, absolutely right. Huh? 5 days. Okay. So 5 days is incorrect, 2 days is correct. Now she has done it correctly. Okay. अरे कहाँ चला गया? Come on to the next question. Question 14 ये हो गया है. 15 की तरफ चलते हैं. Who was Joe? जो आखिर में कौन था? नर्स, पग, ग्रेहाउंड, कैट. जो कौन था? ओके. यस, कम प्लीज. ये जो के बारे में पढ़ाया हूं, आई हैव टॉट यू. करो. हाँ, सोच लो, खूब बढ़िया सोच लो, अच्छा सोच. Cat. Wow. That is also wrong. Yes, that is right. Go back. This is also wrong. Joe was a greyhound. एक greyhound था. Greyhound क्या है? Dog है. This is a actually species of dog. Okay, greyhound. Okay. Joe was a greyhound. Clear? Now next question. Move on to question number 16. Please be quiet. Question number 16, please. What did the dogs know about food? ये जो डॉग्स थे फूड के बारे में क्या जानते थे? क्या था उनमें जब फूड्स की बारी आती थी खाने की? Last ones will be liable to have competition for the leftover food. There was no competition. It wasn't good. Number D. It was the best part of the day. और इधर कोई बचा है? Okay. Come. Give the right answer. भोजन करने की बारी आती थी तो उनका कैसा मूवमेंट रहता था, ये भी मैं तुम लोग को बताया हूं. आई हैव टॉट यू इन द लेसन. Go. It is absolutely wrong. Okay, I must not waste time. Okay. A is the last answer, right answer. Last ones will be liable to have competition for the leftover food. तुम्हें याद होगा जो लास्ट में जो एक कोई कुत्ता जो धीरे धीरे खाता था उसको क्या बचा हुआ भोजन भी खाने मिलेगा, वो कंपटीशन रहता था कि दूसरे का बचा हुआ. ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉस्टलिंग? जॉस्टलिंग का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर रनिंग, नंबर बी स्ट्रगलिंग, नंबर सी वॉकिंग, नंबर डी नन ऑफ द अबव. जॉस्टलिंग के बारे में भी हमने चर्चा किया है. ओके, running is absolutely
Wrong. Okay. The correct answer is struggling. Struggling is the correct answer. Okay. Now next question. What is the meaning of the word scrimmage? So beautiful words are there. Okay. What is the meaning of the word scrimmage? Fight, play, run, none of the above. Okay. Next. Sonu Kumar, come. What is the meaning of the word scrimmage? Scrimmage से क्या मतलब है? Do you all agree? Fight is the correct answer. Okay. The meaning of word is scrimmage. The dog used to fight with each other in playful manner. Okay. So the meaning is fight is the correct answer. Okay. Scrimmage meaning is fight. Now I will move on to the next question. Question number 19. What does the narrator refer to Tricky as in the group of other dogs? Okay. ट्रिकी को क्या चीज से रिफर करता था नैरेटर? क्या बताता था? दूसरे ग्रुप ऑफ डॉग्स से अलग क्या बताता था? देखो, द ऑप्शंस आर नंबर ए सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, नंबर बी शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, नंबर सी ही डिडंट से एनीथिंग, नंबर डी नॉन ऑफ द अबव. मैंने भी इसका भी चर्चा किया है. ओके, कम. Yes, a silky little object is absolutely right. We have discussed in the lesson. Okay. Now next, a beautiful word. What is the meaning of the word convalescing? See how beautiful the word is. Okay, the options are condescending, worsen, disappointing, recover. Okay. So these four options are given. You come. Give the right answer. Convalescing means recover. Recover is the right answer. Option D is the correct answer. The dog is convalescing. The doctor has reported to Mrs. Pumphrey. So convalescing means improving. Okay, recovering, improving. Okay. Now I will move on to question number 21. What did Mrs. Pumphrey bring first? सबसे पहले Mrs. Pumphrey क्या लाई? Eggs, brandy, wine, none of these. क्या लाई? Eggs लाई, brandy लाई, wine लाई. क्या लाई? Okay, yes, you come. Brandy is absolutely wrong. Okay. Do you think wine? So eggs, she first of all started bringing eggs, and the doctor and his supporters and his colleagues, they were enjoying with the eggs first. Okay. Hey, keep quiet. Now I will move on to question number 22. How did the staff benefit from Mrs. Pumphrey's overdoing? जो डॉक्टर और उसका स्टाफ किस प्रकार उनको फायदा हो रहा था, जिस प्रकार मिसेस पंफ्री एक अलग अलग प्रकार की चीजें भेजा करती थी कुत्ते के लिए कि कुत्ता जल्दी रिकवर करे, हट्टा कट्टा फिर से हो जाए, ठीक है, उसका कमजोरी दूर हो जाए. द ऑप्शंस आर ब्रेकफास्ट विथ एग्स, लंच विथ वाइन, डिनर विथ ब्रांडी, ऑल ऑफ द अबव. So, you come please. Yes, D is absolutely the right answer. The staff benefit from Mrs. Pumphrey overdoing in this way. They got breakfast with eggs, they got lunch with wine, they also had dinner with brandy. So all the three things Mrs. Pumphrey used to send: eggs, wine and brandy, and they enjoyed a lot. Okay. Now you see, what made the narrator call Mrs. Pumphrey after a fortnight? Narrator
मिसेस पंपरी को 15 दिनों बाद, फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स, हाँ, क्यों बुलाना चाहा, ठीक है, कॉल करना चाहा, ठीक है, फोन कॉल किया था. नंबर ए, टिकी गॉट रिकवर्ड. नंबर बी, टिकी गॉट अनवेल. नंबर सी, न्यू सी इज सफरिंग. नंबर डी, बोथ ए एंड सी. ओके, उधर कौन बचा हुआ है? यस, यू कम. Give the correct answer. Tricky got recovered. This is incomplete answer. Yes, come. You come, you come. एक मौका दूंगा मैं, क्योंकि हम लोग खत्म करने जा रहे हैं. इसके बाद 2 स्लाइड और है. ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इनकम्प्लीट. So, I'll give you the right answer now. So, both A and C are correct. Both A and C are correct. Tricky got recovered. He knew she is suffering. उसको मालूम था डॉक्टर को कि वो बहुत पीड़ित है. कौन? मिसेस पंपरी. She was just crying for the dog. That's why he made a call to Mrs. Pumphrey. Okay, now move on to question number 24. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. 2 सप्ताह में एक दुबला पतला एनिमल के रूप में बदल गया था. कौन? ट्रिकी, डॉग. What is the meaning of the word lithe? Lithe का मतलब क्या है? Dirty, graceful, misbehaving, rude. Okay, डर्टी, ग्रेसफुल, मिसबिहेविंग, रूड. ओके, अभी कौन बचा है? आ जाओ. गिव द करेक्ट आंसर. Hey, don't. So graceful is the absolutely right answer. The meaning of other word of grace, lithe is graceful. Okay, graceful मतलब सुंदर जैसे बन गया था. वैसे जैसे फैटी शरीर था, फैटी शरीर से दुबला पतला शरीर तो हो गया था और उस चेहरे पर एक रौनक आ गया था. ठीक है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू. व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दिस? व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दिस? ठीक है, वो लोग क्या यूज करते थे इन सब में? ठीक है, द ऑप्शंस आर टॉयज, कुशन्स, कोट्स, नन ऑफ द अबव. कौन? ट्रिकी के जो मालकिन थी मिसेस पंपरी, उसके नौकर चाकर और भी लोग क्या यूज किया करते थे? ओके, व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दिस? ओके, टॉयज, कुशन्स, कोट्स, नन ऑफ द अबव. क्या यूज करते थे वो लोग? यस, आ जाओ. कुशन्स. Do you all agree? Do you all agree? How many of you agree that cushions are correct? Cushions. What did they use out of this? Okay. Out of these they use toys. Okay. Cushions is not correct. Okay. They use toys for the dog. Okay. So we have come to the end of this lessons, multiple choice questions. I will be coming up with more multiple choice questions in the next class. Till then, goodbye. Thank you.